Hello students, how are you all? Last time we were doing our chapter word processing, and in which we were doing modifying layout of a paragraph, right? So in which we did about alignment and indentation. In case of indentation, we are left with only one small point, that is tab stop position. As you all know, जब हम tab की press करते हैं तो भी हमारा क्या होता है, पैराग्राफ इंडेंट हो जाता है. So how can we modify this tab stop position? By default we have half inch of tab stop position, but in case if we want to change the position, the amount in which that shift with the tab key pressing, तो हम क्या करेंगे, first of all open paragraph dialog box, same process, page layout tab, then paragraph group, and click on downward arrow and your paragraph dialog box will open up. In the last corner of paragraph dialog box we have tabs option. Click on this tab button and you will again open a tabs dialog box. In this tabs dialog box you have tab stop position option, on which you can fill your tab stop amount by which you want to shift your text, and at the side you have default tab stop position. Okay, next is your alignment option. This is the alignment option for your tab stop position, in which you have left, right, center, decimal and बार. लेफ्ट में क्या होगा, आपके टैब पर जो स्टॉप पोजीशन है उसके लेफ्ट में आपका टेक्स्ट अलाइन होगा. इन केस ऑफ राइट यू विल have the text aligned to the right of your tab stop position, and in case of center it will be aligned around the tab stop. In case of decimal it will align the decimal points on your screen, and in case of bar it will draw a vertical line on your document. So it was your last point of modifying layout of your paragraph. Next we are going to study about header and footer. What is header and what is footer? We have header and footer. हेडर एंड फुटर होते क्या है? सपोज हमारा कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है तो इसमें हम चाहते हैं कि कुछ फिक्स हो जाए ऑन द टॉप ऑफ एवरी पेज. सपोज जैसे आपके एग्जाम पेपर्स आते हैं तो उनमें आपके स्कूल नेम एंड दिस प्री डिफाइंड इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज फिक्स्ड, दैट इज अ हेडर सेक्शन. सो हेडर एंड फुटर, हम फुटर क्या होगा, बॉटम ऑफ योर पेज जिसपे आपने कोई टेक्स्ट, ग्राफिक या कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर इंसर्ट कर रखा है, दैट इज अ हेडर एंड फुटर. तो हेडर एंड फुटर होते क्या है? हेडर इज द टेक्स्ट और ग्राफिक्स दैट अपीयर एट द टॉप ऑफ आवर text document, and same way footer is the one that appears at the bottom of your text document. So we are going to study how we are going to insert header and footer, how we are going to edit that header and footer, and in case if we have to remove that header, how we are going to perform that operation. First we have insertion. Insert कैसे करेंगे हम header and footer को? First of all go to insert tab, and in insert tab you will have a header and footer group. After going to this you will have the option of header, footer and page number, right? Suppose you have to insert your header, then click on header option. जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी बिल्ट इन हेडर्स की. बिल्ट इन हेडर्स मीन्स दैट आर ऑलरेडी प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स फॉर योर हेडर, लाइक ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द बॉटम, राइट साइड या फिर सेंटर ऑफ योर हेडर. जहाँ भी आपको टेक्स्ट, ग्राफिक, वट एवर यू वॉन्ट टू इंसर्ट, कौन से फॉर्मेट में आपको हेडर जो है वो अप्लाई करना है. सो यू विल सेलेक्ट एनी ऑफ दिस and that format of your header will be inserted on your text document.
जैसे ही आप क्लिक करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो आपके हेडर एंड फुटर टूल्स जो हैं अपीयर हो जाते हैं एंड दैट इज योर डिज़ाइन टैब दैट इज ओपन बाय डिफ़ॉल्ट। डिज़ाइन टैब में आप क्या कर सकते हैं, अपना जो हेडर एंड फुटर आपने इंसर्ट किया है उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आप चाहते हैं कि हेडर एंड फुटर में कोई पेज नंबर इंसर्ट हो जाए, यहाँ से भी आप पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, डेट एंड टाइम आपको इंसर्ट करना है या फिर कोई पिक्चर आपको इंसर्ट करनी है तो कहाँ से करेंगे। जैसे ही आपका डिज़ाइन टैब ओपन होगा उसमें आपका सेकंड ग्रुप होगा इंसर्ट एंड यू विल हैव डिफरेंट बटन्स लाइक डेट एंड टाइम, पेज नंबर, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट्स, व्हाटएवर। तो जो भी आपको अप्लाई करना है, सपोज यू हैव टू इंसर्ट पेज नंबर, देन क्लिक ऑन पेज नंबर एंड अगेन you can format that page number. For date and time, as you click on date and time button, you will have different formats for inserting date and time. In case of picture and clip arts, same way you can apply. You can choose from your browser, folder browser, and click on the particular picture which you have inserted in a header. As you are done with modification of your header and footer, you will have option of close header and footer in your design tab. One way is to click on this button or the simple way is to click anywhere in your main document. आप क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट पे मेन डॉक्यूमेंट पे अगर क्लिक कर देते हैं डबल क्लिक तो क्या होगा, आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा हेडर एंड जो मेन डॉक्यूमेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा, बट whatever you have inserted in your header that will still remain in your header area. Okay, suppose you have inserted something but you want some modification or some editing in your header. Again, one way is to double click on your header area. Same way your design tab will be open and you can modify your header or you can do whatever alteration you want to do in your header area. See, one way is this one. Last point is you have to remove. You don't want to keep that header in your document anymore. For that reason you can simply go to insert tab. In header and footer group you have header option, click on that header option, a sub menu will be open and at last यहाँ पे भी क्या होगा, one way is to edit is simply double click on that header, or if you don't want to modify this way then you have edit header option here also. यहाँ भी क्या होगा, आपका एडिट हेडर का ऑप्शन है और उसके बाद नीचे ऑप्शन है आपका रिमूव हेडर। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं अपने हेडर। सो दिस वाज अबाउट योर इंसर्शन ऑफ हेडर। नेक्स्ट कम्स योर फुटर। फुटर के लिए आप क्या करेंगे, if you have to insert the footer, same way go to insert tab, then open your header and footer group. In header and footer group you have footer option. Footer क्या है आपका, any information that is on the bottom of your text document. फुटर में आप क्या करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके बिल्ट इन फुटर्स का पूरा फॉर्मेट जो है ओपन हो जाएगा। सेम वे यू हैव सम फॉर्मेट्स फॉर द footer option and next you have added footer and last is remove footer. The process is same as you did in header option. Same way you can choose the built-in option. As you choose, your footer will be inserted in your text document and design tab will be open. In design tab you can apply some modification in your footer option. And as you are done with, either you can click on close header and footer or you can double click on your main document. If we have already inserted header and footer in our system but we want to edit it later, then go to either double click on that area or go to edit footer option. If we have to remove, then click on remove footer option. Last is your page number. Like sometimes we want to insert page number in our text document. For that reason, one was option in our design tab of header and footer.
If we don't want to go for that, we have page number option in our header and footer group of insert tab. We have insert tab, then as we open insert tab we have header and footer group, and in same group we have page number option. For that page number we have predefined formats, or we have format page number option. If we don't want to choose from the predefined options, we can go for format page number option. As we click on format page number, a separate dialog box is open in which we can choose for different formats for our page number, or the option for from where we want to start the page number, where we want to insert the page number, in which format, like 1, 2, 3, or in Roman numbers, this way. In whichever format we want to insert the page number, that is about insertion of page number. If we want to remove, same, or we can choose for enter the page number automatically. Okay, so this was all about our management of header and footer in our text document. Thank you, class.